So welcome everyone. Good morning. It's Sunday 5 PM. शाम के 5 बज चुके हैं, रविवार की शाम के, और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर लिम, और उन्हीं का कॉल आ रहा है, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम उनसे ज्वाइन करेंगे और उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि हमारा कंटिन्यूएशन सीरीज अभी बाकी है। सो डॉक्टर लिम हमसे जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर लिम जैसे जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। So just to let you know that we are continuing a series on the great universities of India and what their teachings were, and Dr. Lim is going to share about these, basically the 3 great universities. So without wasting time, I'm going to give him a call right away to see that we will have him, because we just tested. Right, I'm going to give him a call. So we have, I'll just see Dr. Lim coming. Using the yeah, Dr. Lim, no problem. Yeah. Sorry, yes, because no problem. No, first time using this. Yeah, okay. It's on and off, But I touch the screen, everything go off. I cannot touch the phone. No problem. But the image is very clear, doctor. Yeah. This is a handphone. Yeah, using a handphone. Yeah. Beautiful. So shall we start? Yeah. Yes, doctor. So we are continuing a series of the teachings of the 3 great universities, and last time we spoke a lot about Sri Parvata University of South. Spoke about Nagarjuna. I think now we are left with 2 more universities, the Takshashila and Nalanda University, and their teachings and their masters. Okay. So today, basically, we try to focus on Takshashila University here. So आज जो basically हम बात करेंगे वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में. Yes, sir. Actually, Sri Parvata is a mother of all university. You see the Sri Parvata, all the school actually from Sri Parvata. Okay, the Sunyata school, the what you call Vimarakati school. Okay, this Lotus school. And also the yoga school, all are from Sri Parvata. But apparently, Nagarjuna focused a lot on Sunyata. जो बाकी की स्कूल्स हैं, अगर आप योगाचारा स्कूल देखें तो ये सब स्कूल्स का जो बेसिक सोर्स है वो इन्फ्लुएंस हुआ है श्री पर्वता यूनिवर्सिटी से, और लेकिन नागार्जुना ने जो फोकस किया था, प्राइमरी फोकस उनका था वो था शून्यता पे. ये सर. Yeah. Then when come to this first is the Anapana. Anapana is a very important teaching from this Takshashila University, and also Sunyata. Okay, so the Kusan also very famous for Sunyata. But other than that, this Supreme Abode. Today we're going to discuss the Supreme Abode, and also this Supreme Consciousness. So 3 aspects, Rajesh. Okay, Anapana. This Sunyata and Supreme Abode. तो बेसिकली जब हम तक्षशिला की बात करेंगे
तो डेफिनेटली आज जो डिस्कशन होगा वो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे होगा। वो है जो है अन्नपाना, दूसरा है शून्यता और सॉरी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और तीसरा है सुप्रीम अबोर्ड। Even the Sunyata also is included in that, right, Doctor? Yeah, yes, yeah, Okay, yes, yeah. yes, yes, yes. Annapana, Shunyata, This, and this, Supreme Award. actually, the university they teach all, no? They teach Uh-huh. all the discipline. Okay, like even this Lotus school also is very famous in Taxila. But every school have Taxila. Okay, is this Annapana and also the Supreme Abbot school. तो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी सभी एक्चुअली वहां पे सभी कुछ सिखाया जाता था, लेकिन हर यूनिवर्सिटी की कुछ खासियत थी, और तक्षशिला की खासियत ये थी कि वहां पे अन्नपाना और जो सुप्रीम अवार्ड उसके बारे में बताया जाता है। ये डॉक्टर। Yeah. So let's talk about this two school. Okay. Yeah. Now we are not very sure whether Nagarjuna is focusing on Anapana or not, but Kumarajiva is definitely he is a promoter of Anapana. Okay, the breathing or reverse counting. Okay, if you don't understand anything about Anapana, think of reverse counting. हाँ, अगर आप लोगों को अन्नपाना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। सिर्फ रिवर्स काउंटिंग ये अन्नपाना से जुड़ा हुआ है। देखो नागार्जुना ने कितना वहां पे जाके इसको प्रमोट किया या तक्षशिला में कितना उनका ये कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कुमार जीवा का कंट्रीब्यूशन और कितना अच्छी तरह उन्होंने अन्नपाना को प्रमोट किया ये इसके बारे में डेफिनेटली हमारे पास रेफरेंसेस है। Yeah. So this for this Kumarajiwa and also Ansukau, so both of them are trained in this Taxila University. Okay. Now, why Anapana is so important? Okay, why Anapana is so important? Now, let me explain. देखो कुमार जीवा और अंशी गांव इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अन्नपाना को प्रमोट किया था। अभी हम जानेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अन्नपाना। ये डॉक्टर। You see, we talk about Sunyata. Sunyata said that we should detach from name and form, nama rupa. Okay. Now, how to detach from name and form? We need a method, and this method is Anapana. Okay. So Anapana and Sunyata, these two are grouped together. One is the theory. Okay. One is the practice. Okay. ये अन्नपाना और शून्यता ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक जो है वो है थियोरी और दूसरा हुआ है प्रैक्टिस। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे रिवर्स काउंटिंग और हमारा जो ये है फॉलोइंग द ब्रेथ, ये हमारा अन्नपाना से भी जुड़ा हुआ है, शून्यता से भी जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। यस डॉक्टर। Yeah, and also come to practice, no? When come to practice of Sunyata, don't forget, no, there's a Patanjali. Patanjali is also a yoga that practice Sunyata. It's also from this Taxila. जब प्रैक्टिस की बात आएगी तो सबसे अच्छा नाम और बड़ा नाम अगर लिया जाए जो तक्षशिला से जुड़ा था वो है पतंजलि का, और पतंजलि ने अपने योग सूत्र भी लिखा हुआ था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तक्षशिला की। यस डॉक्टर। Yeah, this just a short cap of this Patanjali, the 8 practice of Patanjali. Okay, you look at we quickly go through the 8 practice. जो हमारे पतंजलि के जो 8 प्रैक्टिसेस है वो उसके बारे में हम एक शॉर्ट में हम जाएंगे कि वो क्या सिखाते थे। यस डॉक्टर। First, yamas, the morality. Yes. पहला जो है यमा, मतलब आप मोरालिटी कितनी, आपका बिहेवियर कैसा है, इस पे उन्होंने बहुत ये इम्पोर्टेंस। Yama is a morality. Then the niyama is a virtuous behavior, right behavior. Okay, right behavior. Then the asana is the posture. Yeah. So yama, niyama, asana. नियमा में आपका कैसे नियम पाल रहे हो वो, और आसना मतलब आपका पोस्चर, आप कैसे बैठने वाले हो। यस डॉक्टर। Then the pranayama means the breathing. Focus on the breathing. Then this what we call pratyahara, detachment from the sensory. हाँ, अभी प्राणायाम मतलब फोकस ब्रीदिंग पे रखना है, और प्रत्याहार मतलब आपको विषयों से डिटैच होना है। डिटैचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ।
Then dharana, holding the mind, the focus of the mind. और धारणा जो है अपने मन को कंट्रोल में करना या फोकस करना है. Then this dhyana is on dhyana, the Zen, okay, the meditation. और ध्याना तो zen है, yes, meditation. And the last one, samadhi. I think we already talked too much about samadhi, the focus of mind. और लास्ट में जो है वो समाधि, जो फोकस ऑफ द माइंड है. यस डॉक्टर. So Patanjali, okay, Patanjali simply, the training of mind and body, finish. तो पतंजलि ने कुछ और स्पेशल नहीं सिखाया. उन्होंने सिर्फ सिखाया कि माइंड और बॉडी, इसका ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. इन्होंने वो बताया था. You see, look at the posture. You need the posture that's on the body. Okay, you need to control yourself. No, your action must be right. It's on the body. Okay, so you control your body, then you can have a good mind. पतंजलि ने ये कहा कि शुरुआत में अगर देखा जाए कि पोस्चर, जैसे आसन कहा गया कि अगर आप बॉडी को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो मन को कैसे कंट्रोल कर पाओगे. इसलिए फर्स्ट कंट्रोल अपने बॉडी पे होना चाहिए. Say that the teaching of Patanjali actually is coming from Anapana. और माना जाता है कि जो थियोरी है पतंजलि की, ये आनापाना से आती है. But Anapana are much more complex, much more complex than mind and body. Because mind and body, you remember, when it comes to the yoga, this is the initial stage, mind and body. Okay, then the Anatana talk more than mind and body, talk more than that. लेकिन देखो, जब हम अन्नपाना की बात करते हैं, सिर्फ शरीर और मन नहीं है. यहाँ पे जो पतंजलि बात करते हैं शरीर और मन की बात कर रहा है, लेकिन अन्नपाना जो है ये उससे भी ज्यादा डिटेल में बात करता है योगा के बारे में. तो योगा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. यस डॉक्टर. Patanjali talk about samadhi, stop, and Anapana, you remember the sixth gate is the third gate, is the third one. So the first two, mind and body, then you become samadhi, the third one. जब हमने 6 गेट्स, अगर आप लोगों ने वो प्रोग्राम नहीं देखा होगा जरूर देखिए. 6 गेट्स जब हमने किए थे शून्य के, तो जो पहला और दूसरा जो माइंड और बॉडी था, तो तीसरा वाला जो था वो था समाधि का. वो यहाँ पे बताया गया है. So you can say that Anapana, okay, is a bigger body of Patanjali. तो अगर अन्नपाना को अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो ये बहुत बड़ा बॉडी है जो पतंजलि का है, उसका ही बड़ा पार्ट है उसका. सो बेसिकली पतंजलि वाज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग ऑफ अन्नपाना. Anapana is huge now. Anapana is very big. So Patanjali, okay, is a part of it. Okay, or you can say even the Vipassana also part of it. तो अगर आप देखा जाएगा तो पतंजलि का योग सूत्र है, तो ये अन्नपाना का एक छोटा सा पार्ट हुआ. विपासना भी अगर देखा जाए वो भी एक छोटा सा पार्ट हुआ अन्नपाना का, जो अन्नपाना मेन टीचिंग है, बड़ी वाली टीचिंग. यस डॉक्टर. Rajesh, you listen carefully. When we say part of it, doesn't mean essential step you have to go through when you want to practice yoga. No, doctor, please again. I just missed it. Yeah. You have to listen to me. Yeah. I speak very carefully. Okay. When we say part of it, we doesn't mean that it is inferior. Yeah. It is no good. It cannot be comparable to Anapana. It is Anapana. Okay, it's Anapana. जब डॉक्टर लेम कहते हैं कि एक पार्ट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंफीरियर है या कहीं कम है. इसका मतलब कि वो एक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बड़ा है, लेकिन बड़े में और डिटेल में बताया गया है. सो बेसिकली इट मींस डॉक्टर दैट यस इट इज इंपॉर्टेंट, बट देयर इज लिटिल मोर ऑफ इंफॉर्मेशन देयर आउट देयर इन द बिग बुक. दिस इज अ पार्ट ऑफ इट. Yeah. You remember Rajesh, one of our seniority, okay, he said that okay, reverse counting finish enough. You do not need anything more than reverse counting. और हमारे एक सुनीति ने कहा कि चलो एक उल्टी गिनती कर लो, बस उससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए. No. Reverse counting is the beginning. It is the beginning. So you see, now Patanjali are more like the intermediate. Okay, our reverse counting, our follow this thing, it's just before Patanjali.
देखो पतंजलि जो है ये एडवांस स्टेज था। जब शुरुआत में अन्नपाना की बात आती है तो रिवर्स काउंटिंग, फॉलोइंग द ब्रेथ, ये वाले जो थे वो इनिशियल स्टेज थे, मतलब पतंजलि के पहले वाले स्टेज थे। यस डॉक्टर। Because after reverse counting, after this following of this breath, okay, you need to go to samadhi, you go to samadhi and greater vipassana, okay, and these two is covered by Patanjali. जब हम लोग रिवर्स काउंटिंग, फॉलोइंग द ब्रेथ करते, फिर हम एक ऐसी स्थिति पे आते हैं जब हमारी जो बॉडी है और मन है ये एक समाधि स्थिति में आ जाता है। ये स्थिति के बाद हमारा जो और आगे काम है, हमको ग्रेटर समता विपස්සना जो प्रैक्टिस करनी है वो वाला करना है। तो ये जो है ये पतंजलि ने सिखाया था। एंड डॉक्टर ही रोट अ सीरीज ऑफ सूत्रास ऑन दैट, पतंजलि सूत्रास। So there's a lot of sutra on Patanjali. There's a lot of this yoga sutra on Patanjali. Okay, and this is associated with Taxila. और ये जो योग सूत्र लिखा है पतंजलि में, इन्होंने ये तक्षशिला से जुड़ा हुआ है। आप जाके इसको आप रिसर्च भी कर सकते हो। यस डॉक्टर। That's why for us we can understand Patanjali very, very clearly, because we are familiar with Anapana. Okay, we can understand Patanjali. That is true, doctor, because after like recently when I started reading Patanjali, it was as if very easy, because it was so easy for me to understand, because I know the concept now. I know the whole, so I can understand even this part. तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी जब पतंजलि सूत्र अभी पढ़े तो मुझे बहुत इजीली समझ में आया, क्योंकि अभी हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, जो हमारा शून्य का कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से हर एक स्टेज, आसन, यम नियम आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ये सब चीजें हमको समझ में आती है। क्यों? क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ये डॉक्टर। You should not take what does not belong to you. Okay, you should not reserve harmony. You should not force claim. You should not intoxication. It's the first rule. First and second rule in Patanjali. You look at Patanjali, it's been the same thing. तो पतंजलि ने भी वही कहा है। जब सबसे पहले यमा बताया कि किसी की चोरी मत करो, अपने कि व्यभिचार मत करो, अपने यानी झूठ मत बोलो, ये सब जो पंचशील बताया ये पतंजलि ने बताए हुए हैं बहुत क्लियरली। यस डॉक्टर। So you see like yamas and niyama, this thing about the morality and virtuous behavior. Okay, so this when come to the eight normal paths, eight normal paths, right mind, okay, right view, right thinking, right thoughts, this thing. So all these things, only thing is that Patanjali is he give you the teaching. तो अभी ये बताया गया जो यम नियम ये सब चीजें, इसमें आप देखोगे पतंजलि ने हमें क्या दिखाया है, क्या दिया, क्या है, हमें सीख दी है, टीचिंग दिया है पतंजलि ने। To various area, okay, so that you have to be very careful, because many scholars they don't have the background of Anapada, so when they study Patanjali, it become very, very funny. देखो बहुत सारे स्कॉलर्स जो पतंजलि को पढ़ते हैं उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता प्रैक्टिस का ना स्टडी का, तो वो जब इनके बारे में कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो वो कुछ अलग ही हो जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाती है उनकी। यस डॉक्टर। You know the asana, the posture, okay, so under this guru's hand you become acrobat, Yes, you become acrobat. जैसे हाँ, पतंजलि जब बात आती है तो हमको पतंजलि एक ही चीज याद आती है। पतंजलि मतलब योगासन, योगासना बोला तो हमको लगता है कि जो आजकल एक्रोबैटिक्स होता है वो होगा, लेकिन एक्चुअली पतंजलि ने आसन के बारे में ये बताया नहीं है। Because he is not mentioned that you need to do so much difficult asanas. No. Relax yourself, sit comfortably, your this is requested in Patanjali. He do not ask you to twist your body to become acrobat. Doctor, even if you look at the word asana, even if you go to Hindi meaning, even today, even Hindi is derived from Sanskrit. Even the word asan in Hindi means easy, simple, but yet easy. it is made into something else. So and also, doctor, when I was looking at the word similarity, where the word charity, for somebody to do good with the society, interact with the society, the greater vipassana, the charity, it comes from the word charitra. It comes from the word Hindi word charitriya. Charitriya means charity. Charitra means your good behavior, yama and niyama.
Yeah. Okay. Yeah. This a thing. Okay, but under this guru's hand, it become distorted beyond recollection. Yeah, We yeah, we doesn't know that it is anything to do with Patanjali, yeah. but they claim Patanjali, to be their sutra. नो, ये सही बात जो डॉक्टर लिम बोल रहे कि एक बार गुरु के हाथ में पतंजलि के सूत्र आ गए तो वो कुछ और ही बन गया। लेकिन सही में माने तो पतंजलि के सूत्र है ये तक्षशिला से जुड़े हैं, अन्नपाना से जुड़े हैं और काफी इंपॉर्टेंट है हमारी शून्य स्कूल के लिए भी। एंड आई सेड डॉक्टर पतंजलि सूत्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर आवर स्कूल, शून्य स्कूल। Yeah. For UNESCO. Actually, it's part of our teaching. It's part of it because it's from the Taxila, the area, तो It's ये from the area. But the area is very good for Anapana. So for Anapana, of course, then they expand out all this practice, या और ये जो लोग जिनको जानते नहीं है, आई विल जस्ट शेयर द पिक्चर ऑफ तक्षशिला इफ आई कैन, लेट मी शो। या Please. या दिस On इज the top there, या yeah. ऑन द टॉप दैट इज तक्षशिला। ये तक्षशिला का यूनिवर्सिटी है जहाँ से अन्नपाना आता है। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये डॉक्टर Yeah. Actually, you see, is another one is this pranayama. Pranayama, the breathing. एंड If you go to internet, you take pranayama, you see. Doctor, if there is something that is corrupted, one is asana, the yoga asana, which has become acrobatics. The second is pranayama. Pranayama, they have made it into something that they want to control. Yes. They have so many different things. You know, technically, even medically, to torture your lungs like this doesn't make any sense. It's very harmful. Yeah. So Sometimes it can do more harm. Just like you roll your eyes now when Yes. you meditate, it's very bad for meditation. ये देखो ऐसे आंखें करना मेडिटेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज ये करना ये भी लंग्स के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम जो हम डॉक्टर लिम ने हमको सिखाया, सिट डाउन और सांस से जाती है आती है उस पर ध्यान दो, बस वही करना है। आई सेड प्राणायाम बेसिकली वाज टू ऑब्जर्व द ब्रेथ गोइंग इन एंड आउट, Yeah. दैट्स इट। Yeah, in and out breathing, not to exercise your breathing, Doctor, the kind of breathing exercises that are taught and people pay money to learn this. The recent one is called the tiger breathing. No, I'm telling you, this is from this is from your monkey master. You know, there is one great master who is teaching. He is teaching how to do tiger breathing. He's telling that put your tongue back and then you have to do. Then that is what I was shocked. That is what is happening. We have to be very, very careful in the way things are getting corrupted, and what is the real knowledge which is easy and simple to practice is being made into so much form, name, and so much complication that it is not helping but definitely harming people. Yeah. So I think you can translate that to Hindi for them to understand. Yeah. मैंने जब अभी लेटेस्ट चल रहा है, बाबा लोग जो सिखा रहे हैं, देखो आपको भी पता है प्राणायाम इंडिया में जो सिखाया जाता है, प्राणायाम मतलब प्राण पे अयम करो, कंट्रोल करो। प्राण पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका सांस ऐसा लेना, ये लेना, फिर पेट को ये करना, फिर ये लंग्स को करना, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के साथ भी है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के साथ है। इसके साथ छेड़खानी नहीं करते। जो हमको सिखाया गया शून्य स्कूल में, बैठ के सांसों को देखो, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, कभी सांसें जल्दी जाती है, धीरे जाती है, आपको देखना है। ये टाइगर वाला ये सब चीजें नहीं करनी है, डेफिनेटली नहीं करनी है। No, you see, doctor, you go on the internet, you will find thousands of people doing thousands of things. So we have two acrobatics. One is the postural acrobatics, asana, and now respiratory acrobatic. That is another thing. Yeah. So this breathing also desperate. It's not become something that beyond recollection, Okay, so if Patanjali were alive again, I think he go to Nirvana immediately again. Very good. अगर पतंजलि फिर से अगर जन्म लेते हैं और अगर देखेंगे उनकी पतंजलि की प्रैक्टिस को क्या हुआ, मुझे जैसे डॉक्टर लिम ने की, वो एक झटके में निर्वाणा में चले जाएंगे कि आई राम मैंने क्या दिया था, क्या हो गया। Yeah. So come back to Anapana. Yes. Why breathing? A lot about breathing, no? Why breathing is important?
देखो यहाँ पे ब्रीदिंग की बात करती है तो अन्नपाना में भी ब्रीदिंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन क्यों क्यों ब्रीदिंग इंपॉर्टेंस है, क्यों सांसों पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है? यस डॉक्टर। Because mind and body, you need to coordinate yoga, mind and body, and there is something in between the mind and body, that is the breathing. Because the breathing can affect the mind, the breathing also can affect the body. So this is something that can link your mind and body. That is breathing. देखो ये सांसें पे ध्यान देना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। शरीर और मन दोनों को अलग किया नहीं जा सकता। शरीर और मन के बराबर बीच में, एकदम बीच में है हमारी सांसें। जब शरीर को कुछ होता है तो सांसें डेफिनेटली अफेक्ट होती है, सांसें कुछ करो तो शरीर को डेफिनेटली अफेक्ट होता है। मन और जो सांसें, इनका भी गहरा संबंध है। मन में कुछ विचार आए तो सांसें बदली, और सांसें बदली तो मन भी बदल सकता है। तो ये सांसों का जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है दोनों मन और शरीर के बीच में, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि सांसों पे ध्यान देना चाहिए। या डॉक्टर, It say that this breathing is linked to your mind. So when your breathing stop, your mind also stop. Okay. ये कहते हैं कि जो आपका शरीर और मन और इनके बीच में जो संधान करने वाला हमारी सांसें हैं, ये अगर जैसे सांसें रुक गई तो मन भी रुक जाता है। तो इसका इतना गहरा संबंध है। यस डॉक्टर। So when we practice this reverse counting, we practice anapana, we want to make our mind calm. Okay. Then our breathing become softer and more softer, and sometimes it becomes stop, Then your mind also become stop and serene. No, no, this is idiotic, It's opposite to what is needed. Your tiger is the opposite. Because the first one is easy. It can be done by everyone. The second one, you need a master to teach. So you need the guru. That is the only difference. तो डॉक्टर लीम जो बोल रहे हैं कि सांसें जो होती है, सांसें हमारी अंदर बाहर जाती है, हमको उस पर ध्यान देना है। जैसे हम उस पर ध्यान देंगे, जब हम शून्य करते हैं, जब सांसों पे ध्यान देते हैं तो सांसें धीरे धीरे एकदम सटल हो जाती है। और ऐसा वक्त आता है जब आपकी सांसें, आपको एहसास होगी चल ही नहीं रही है, रुक जाती है। ये रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्थिति से आपका मन भी खुद ब खुद रुकने की ताकत रखता है। ये डॉक्टर, those guru, they know nothing about breathing. They know nothing about breathing. They know that breathing is exercise, but they know nothing about breathing. They doesn't know that breathing linked to the mind and linked to the body. So they created a kind of breathing exercise, just to make money. Yes, and they have you, doctor, to just endorse what you said. Their techniques are patented. Can you imagine? As if they have found it. So this is what patented. So ये तरीके जो निकाले हैं किसी भी गुरु ने, क्या हो कि अपने हिसाब से अपने मार्केट में एक प्रोडक्ट लाने के लिए एक रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म उन्होंने ये निकाला है जिससे आप प्राण पे कंट्रोल कर सकते हो, सांसों पे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये सही नहीं है। सही तरीका जो हमको शून्य से मिलता है, जो अन्नपाना से जुड़ा हुआ है। एंड इन अन्नपाना, डॉक्टर, इफ यू लुक एट अन्नपाना, देयर इज नो कैरेक्टर, देयर इज नो समबडी कैरेक्टर लाइक अ फिगर whom you can worship or you can follow. This is completely a practice. While in Patanjali was still a character. They sold the character. That is why he was accepted and he's worshipped. No, you see the same thing, You see, Anapana, we also link to Ansakao, We also link to Kumarajiva, but we do not worship Ansakao. We do not worship Kumarajiva. देखो, we do have character, but we don't worship. ये अन्नपाना में भी देखो हमारे कैरेक्टर्स है, अंशिगाव है, कुमार जीवा है, लेकिन कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी उनको वर्शिप नहीं किया जाता, उनकी पूजा बीजा नहीं की जाती। वो टीचर थे। यस डॉक्टर। You study Patanjali carefully. He also never asked you to worship him, Never. He's an idiot. They created him he become a convenient tool, to make money. Yeah, absolutely. देखो पतंजलि ने खुद, आप अगर पढ़ोगे तो उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि आप पूजा करो या मेरे को उस स्थान पे रखो। और लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके हाथ में कुछ अच्छी चीज लग जाती है, वो अपना प्रोडक्ट बनाने के पीछे लग जाता है, इसी को मार्केट करके अपने क्या मटेरियल मिल सकता है इससे, उसके पीछे लगता है। और यही हुआ है पतंजलि सूत्रों के साथ भी। या डॉक्टर, Nothing wrong with Patanjali, but everything is wrong with this Guru and Baba. Yeah, as you always give an example, I love this example of the knife. There is nothing wrong with the knife.
The one who holds it Yeah, decides yeah, what it's he's a going to thing. do. Yeah, the whole, yeah, yeah. तो Who जैसे determine डॉक्टर whether लिम, the knife is a good knife or a bad knife. डॉक्टर लिम जैसे कहते हैं कि पतंजलि सूत्रों के साथ कोई बुराई नहीं है, सबसे सही है, सबसे बेस्ट टीचिंग है। लेकिन जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आते हैं जो उसका प्रोडक्ट बना के उसको बेचते हैं और उसके पीछे अपना एम्पायर खड़ा करते हैं, वहाँ पे गलती होती है। जैसे हमेशा उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा कि एक चक्कू जो होती है, चक्कू का कोई गलती नहीं होती, चक्कू चक्कू होती है, वो उसका काम के लिए बनी है। लेकिन जिस किसी गलत इंसान के हाथ में आ गया तो वो उसको लेके भी गलत काम कर सकता है। या डॉक्टर। Yeah. So, Rajesh, when we have times in the future, I think this Anapana, we need a few chapter, no, Yes, to yes. talk about that in a very, very. There's 16 chapter on Anapana. Okay, so in the future, I think chapter by chapter we should go through that. That will take maybe 2 to 3 months, you know, to complete the 16 chapter. अन्नपाना के 16 अध्याय हैं और 16 अध्याय को अगर कंप्लीट करना है तो 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन हम आने वाले भविष्य में इसको ज़रूर सिखाएंगे और इसके हर अध्याय में क्या है इसके बारे में भी डॉक्टर लिम से हम ज़रूर सीखेंगे। या डॉक्टर। So after you study this Anapana, okay, then you look at the Vipassana, you look at the Patanjali Yoga, we can understand much better. जब आपको अन्नपाना समझ में आएगा उसके बाद आप जब विपासना को देखोगे या फिर आप पतंजलि योगा को देखोगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा कि इन्होंने क्या चाहा था, वो क्या कहते थे। या डॉक्टर। Respect the Taxila University, you know, the first thing first, we must revise back the practice of Anapana. The right practice, no. Okay, then we must point out to our practitioner what is the right yoga and what is the wrong yoga from Anapana. देखो, अगर हमको तक्षशिला को वापस पुनरावृत्त करना है तो हमको तक्षशिला में जो सिखाई जाने वाली सीख थी उसको वापस लाना पड़ेगा। और वो सीख जब हम लाएंगे, अन्नपाना की सीख जब लाएंगे, सिखाएंगे और सीखेंगे और दूसरों को बताएंगे, हमारे यहाँ पे उतनी नॉलेज आएगी कि सही और गलत योगा क्या है ये हम समझ पाएंगे और फिर हम भी तो सही करेंगे और जो गलत करें उनको भी सही मार्ग पे लाएंगे, ये चाहेंगे। और उसी से हमारी तक्षशिला की जो सबसे इंपॉर्टेंट सीख थी अन्नपाना, उसी से हम वापस तक्षशिला को खड़ा कर सकते हैं। या डॉक्टर। So when we have time also, we'll maybe 1 or 2 series on this Patanjali, okay, because associated with Anapana. हाँ, और जैसे ही हमारे पास वक्त होगा आने वाले सीरीज में हम जरूर पतंजलि और अन्नपाना इनके बारे में भी सिखाएंगे यहाँ पे। या डॉक्टर। Now you understand that this Sunyata is a theory, okay, Anapana is a practice, okay. So in order to detect the Nam and Namarupa, the name and form, you need to practice Anapana. देखो, शून्यता जो है, शून्यता एक थियरी है जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या है सब कुछ, फिनोमेना वगैरह। लेकिन अन्नपाना जो है ये प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस और थियरी, इन दोनों का संबंध बहुत क्लोज है और इसीलिए प्रैक्टिस और थियरी दोनों ही चाहिए, एक से नहीं चलेगा। ये डॉक्टर। Yeah. Now come to the second part, the Supreme Abode, you know, the Supreme Abode, okay. That one actually is also coming from Nagarjuna. या सुप्रीम अबॉर्ड की बात भी अभी आज सीखेंगे। ये आता है, ये नागार्जुना से भी आता है। बिफोर दैट डॉक्टर, कैन आई टेक अ क्विक क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट वी स्पोक? यस, देयर इज अ क्वेश्चन. It says, but in India, forced breathing is being taught and they claim this enhances the strength of the lungs and the stomach. This is by J.P. Moria. You want to practice your body, you know. Of course, you can practice breathing. Like the Qigong exercise, the Tai Chi, you can practice this thing. But you cannot strengthen your body by forcing the breathing, you know. You cannot strengthen to strengthen your body. No way. No, this is a wrong practice. देखो, आपको सांसों की रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करनी, काफ़ी और भी एक्सरसाइज होती है जो आपको सिंक में ले सकते हैं, जैसे हमारी चीकोंग एक्सरसाइजेज है, फिर ताइची है, इसमें भी आपको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज है। Even doctor, are swinging of the arms, I was actually just checking, it's a breathing exercise because when you swing your arms
you're actually exercising your lungs Yeah, 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 without yeah. effort, but without putting in. Yeah. But You raise your this is hand also up and down, also bring the exercise. exactly. When you expand this thing, you breathe in. Yes, Okay. When you put this now, you breathe now. And you do this after your force is very strong. absolutely. That's what I was going to tell. What we are following is exactly the same thing. This is real pranayama. When we are swinging the arms, we are raising the arms, we are doing pranayama. Yeah. And the question JP Moria had just asked, forcing your lungs, to take in air, to breathe out. Let me give you a small example. Doctor, what happened is there was a yoga teacher here in India, a very famous one. He addresses big audiences, and if you pay good money, you're in the front line, and if you don't pay good money, you're in the back line. And they start the program at 5:30 in the morning. 5:30 in the morning. 5:30 in the morning program starts. It's still cold in the winter season. The people who have not paid or paid less are at the back in the cold, and the people in the front are in the floodlights. They're already warm. When they do exercise, the one in the warm is okay, but the one in the cold, they all suffer from chronic sinusitis, cough and cold, because they Yeah, are yeah. forcing cold air into their lungs in the morning. So yes, definitely not advisable to practice that. So JP Moria, I think you got your answer. Okay, doctor, we continue with No, our you Supreme Abort. continue. You talk about put this thing down. If you practice it for 5 years, 10 years now, with a push, a person can be pushed away in 10 to 20 meters. No. देखो अभी जो हम So, हमारे जो शून्य में हम लोग प्रैक्टिस सिखाते हैं, जब ये स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स, हाथ उठाने का, ये वो इतना पावर आ जाता है आपके हाथों में, क्योंकि आपकी ब्रेथ जो है उसका पावर इसमें आ जाता है. ये अगर आप उसके बाद किसी को पुश करोगे, धक्का दोगे, तो वो 10 से 15-20 मिनट तक दूर जा सकता है. इतनी पावर आ जाती है उसमें. Okay, probably that is why the martial arts, they give this importance to this breathing exercise, right? The one that you teach us. yeah. But not over exercise, no, not the twisting, not over exercise. Over exercise is always wrong. It's always wrong. और Yeah, ये जो yeah. ऐसे ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज जो होते हैं वो नहीं है, वो सही नहीं है. जो अभी हम लोग सिंपल वाली करते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है. या डॉक्टर, लेट्स गो टू सुप्रीम. You see, twisting the body is good. Twisting the body can press the lymphatic strength. To twist the leg, twist the waist, but not to the extreme. Not to the extreme. देखो, ट्विस्टिंग होता है, स्ट्रेचिंग होता है, ये जरूरी होता है. ये लिम्फेटिक सिस्टम को जैसे स्क्वीज करते हैं उसी के लिए होते हैं, और जरूरी होता है, एक लिमिट तक होता है, हर जानवर भी करता है. बट एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए. एक्सट्रीम करोगे तो वहां गलती होती है. डॉक्टर, आई हैव अ कैट. The cat, when it wakes up, Yeah. it actually stretches. That's it. That's the only yoga it does. Yeah. That is the only yoga it does. Yeah. But I go exactly opposite my house is a yoga school. In the morning for 2 hours, they just keep on doing. And I look at my cat and I look at them. I think my cat is a better yoga teacher than the. Yeah, it's a better. Yeah. It's a thing. Okay. No. You see, together with the twisting, you go back to the teaching. Together with the twisting, somebody you're just hitting. Hitting the head, okay? Hitting. This is also part of the practice. देखो, if you want to go, you want to go a full practice. जब आपको फुल प्रैक्टिस करता है, जो हम लोग रिट्रीट में, जब हम शून्य रिट्रीट होता है उसमें हम दिखाते हैं, तो हमको ये हिटिंग वाली प्रैक्टिस, जहाँ पे भी हिटिंग होती है, जब ये ट्विस्टिंग के साथ हिटिंग, कान में, ये सब डॉक्टर लिम ने सिखाया हुआ है, सब बजान, इससे भी बेनिफिट होता है. आई टोल्ड देम इन द रिट्रीट वी टीच ऑल दिस. Yeah, the problem is that those guru, they just get part of it, part of it. Then they put in the Nama, put in the Rupa, put in this thing, they patent it, it become a money making. They give you only chunk of it, a small chunk of it, and they claim everything. प्रॉब्लम ये है कि देखो, अच्छी चीज में से थोड़ी चीज अगर किसी को मिल जाती है, वो इतना खुश हो जाता है कि उसी के आगे नाम और रूप बना के एक प्रोडक्ट बना जाता है, अपने आप को उसको पेटेंट करता है, अपना क्लेम करता है, और फिर उस पर अधिकार जमा के गुरु बन जाता है. गुरु बनने के बाद आपको शिष्य बनाता है, और वो चक्कर वापस हमेशा के लिए शुरू हो जाता है. या So Rajesh, it's important that we respect the university, give them the full teaching. The full teaching, therefore the full teaching, then you can analyze and know this teaching actually is not.
I think JP Moria got your message very clear. He's having his laugh. Yeah, yeah. He has understood it. So I think JP Moria, thank you so much for Yeah, yeah. asking that Very question. good. Very good. Okay. So yes, I think there are many misconceptions around the whole practice of meditation, the spirituality, yoga, and I think our effort is to bring that out. If you all have questions, definitely ask. We will bring that up on the screen. Okay, doctor. Let's go Yeah, to Supreme Abode. We were yeah, saying that yeah. Yeah, talk about spirituality. Talking about spiritual. Okay. सुप्रीम अबॉर्ड की जब बात आती है तो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या डॉक्टर You see, when Nagarjuna talked about sunyata, he keep on reminding us, sunyata doesn't mean that nothing, near. It's not nihilism. There is something always there. What is that something? जब नागार्जुना इतना प्रचार करते थे शून्यता के बारे में, जब बातें करते शून्यता के बारे में, जब लिखते थे शून्यता के बारे में, तो ये नहीं कहते थे कि उसके अंदर कुछ नहीं है। वो मतलब निहिलिज्म, मतलब कुछ भी नहीं है, नास्तिकता के बारे में नहीं बात करते थे। वो कहते थे कुछ है। तो ये जो कुछ है वो क्या था, ये शून्यता में आपको समझ में आएगा। ये रखो, that is the supreme consciousness. Supreme consciousness is something that our body, our body is not us, we own this body, but this body is not us. देखो जब ये शून्यता की बात आती है तो हम एक्चुअली सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो ये शरीर जब हम सोचते हैं कि ये मिट्टी है, ये कुछ नहीं है, नहीं ये मिट्टी नहीं है, ये इतना नहीं, ये कमल है, ये लोटस है। यस डॉक्टर। Like the handphone again, okay. This handphone is very useful. You can personalize your handphone, you put your pictures there, or you decorate it, okay, or it's very intimate to you, but it's not you. Okay, you own the handphone, but the जब फोन की बात आती है, देखो हैंडफोन, ये हैंडफोन में आपके फोटोज है, आपका सब कुछ है, आपसे जुड़ा हुआ है ये, लेकिन ये आप नहीं है, ये आपसे जुड़ा हुआ है, ये आपका है, लेकिन ये आप नहीं है। ये डॉक्टर, your eye, your ear, your nose do something, it must be processed by the mind. Okay, the mind is like CPU, so this is the thing comes to CPU process. Okay, this thing, but this CPU is not you. It's not you. You own it. It's your tools, but it's not you. जब आँख, नाक, बाकी सब चीजें अगर आप देखो जाएंगे तो ये भी आप नहीं हो। यहाँ से जो भी कुछ प्रोसेस होता है, डेटा जाता है मन के पास, मन उसको यूज करता है, एनालाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो मन जो है एक सीपीयू की तरह होता है, कंप्यूटर के सीपीयू की तरह, लेकिन सीपीयू भी आप नहीं हो, मतलब आपका मन भी आप नहीं हो। ये डॉक्टर, Yeah. So what is you? What is us? So the Nagarjuna put up a theory that supreme consciousness, and it is there. It's always there. It cannot be created by the water. It cannot be burned by the fire. It is always there. I think it's our real self. और फिर सवाल यह आता है कि अगर मैं ये नहीं वो नहीं तो मैं हूँ कौन? तो नागार्जुन ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि ये जो है ये है हमारा सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यही है, यही हमारा रियल सेल्फ है। और इसको ना आप जला सकते हो, ना उसको मिटा सकते हो, ना आप उसको सीमित कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, ना भाग कर सकते हो, ये हमेशा रहेगा और रहा है। ये डॉक्टर, So, but Nagarjuna the time is very busy, with all this stupid guru. So he whacked this guru, this thing throughout his whole life, he whacking them, using this sunyata. Okay, to whack them. That's why Nagarjuna is very famous for sunyata, but people forget that he also put forward the theory of supreme consciousness. जब नागार्जुना की बात आती है तो उस जमाने में भी बहुत सारे गुरु थे, और उन गुरु को वैक करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, उनके साथ डिबेट करने के लिए नागार्जुना काफी वक्त, पूरी जिंदगी अगर मान लो कि उन्होंने दे दी, वो दी सबका व्यू सही करने के लिए। जिनकी गलत व्यू था उनको सही किया। और उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति समझ में लेता था उसी को अपना गुरु भी मानता था। तो नागार्जुना का जो शून्यता के बारे में कॉन्सेप्ट है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ये भी जानता है कि नागार्जुना सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में भी काफी बात करते थे। उनसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी उनसे जुड़ा हुआ है। ये डॉक्टर, So you see, then this full consciousness,
go into two directions. When you go to the Taksasila, it developed into Supreme about this school. So when you go to this Nalanda, become like Yogacara school. Because all these are traced to the Supreme concept promoted by Nagarjuna. ये यही सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है ये जब फैलने लगा तो ये अलग अलग जगह पे जाके उसने अलग अलग आप बोल सकते हो नाम ले लिया. फॉर एग्जांपल जब वो तक्षशिला में गया तो ये सुप्रीम अबॉर्ड स्कूल हो गया, और जब वो नालंदा में गया तो यहाँ योगाचारा वाला स्कूल हो गया. ये डॉक्टर, I think the Yogacara, let's talk about the Supreme Abode. in Yogacara they talk about the supreme abode. Your voice cut. Yeah, please. No. Yogacara do not talk about Supreme Abode, but it's the Nalanda. Nalanda talk about Yogacara. Okay, it's another school. Okay, Yogacara is a school. Okay, it's a Supreme Abode also is a Pure Land school. It's another school. But these two schools is linked to the theory of Supreme consciousness. जो ये सुप्रीम अबॉर्ड वाला स्कूल है वो भी जो हमको प्योरलैंड की तरफ लेके जाता है वो वाला एक स्कूल है, और योगाचारा ये एक दूसरा स्कूल है, और ये दोनों अगर देखे जाएंगे तो ये भी हमें सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में ही बता रहे हैं. या डॉक्टर, because Buddha give a lot of teaching, Sometimes some people specialize in one teaching, it becomes a school. For example, this is a Satipatthana Sutra. So if some school they focus Satipatthana, then they develop the Vipassana school. जब स्कूल की बात आती है, देखो फॉर एग्जांपल सतीपतना स्कूल, जब ये सतीपतना की बात आती है, जब वो स्कूल, तो यहाँ से क्या हुआ, विपासना की टीचिंग शुरू हुई. या डॉक्टर, Yeah. So now let's come back to this thing. In our last series, we say that there is a high possibility, that Bhagavad Gita. Okay, Bhagavad Gita is the students of these Nagarjuna who compiled the Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita have three important schools. भगवत गीता की जो पिछले हमारे कुछ एपिसोड में हम कहीं ना कहीं इस नतीजे पे पहुंचे थे कि भगवत गीता जो है ये भी कहीं ना कहीं नागार्जुना से जुड़ी हुई है, शायद उन्हीं के स्टूडेंट्स से लिखी हुई है. और ये इस भगवत गीता में क्यों हम ये मानते कि ये वहां से जुड़ी हुई है, क्योंकि तीनों स्कूल का रेफरेंस आपको भगवत गीता में मिलेगा. या Because it is in this Bhagavad Gita that the Supreme Abode, first the Supreme Abode first proposed in Bhagavad Gita. Okay, you see, now in Bhagavad Gita talk about sunyata. Okay, you should not attach anything to your action. You should do away with the attachment. You should not attach to anything. Can you hear me? Yeah, last part. Just today the connectivity is having a problem. Yeah, connection is not good. Okay. No, you really. There are three schools in this Bhagavad Gita. The first school is sunyata. Mm-hmm. Okay, because Bhagavad Gita says, do your duty. Okay, without attaching to anything. Detach. That is sunyata. भगवत गीता में 3 स्कूल्स की बात आती है. पहली वाली स्कूल जब आती है तो उसमें शून्यता की स्कूल है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपने जो कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, डिटैच रहो, हमेशा डिटैच करके अपने कर्म करते रहो. ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है. एंड आई थिंक एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट भगवत गीता इन इंडिया दैट इट इज सेड दैट डू नॉट अटैच टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन. या Yeah, you do it. This is sunyata. This is sunyata. ये sunyata. ये जो आप जानते हो, everything the word and name is not the same. ये जब सुजाता जानते हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम शून्य, ये जो आप जानते हो कि अटैच नहीं होना, यही शून्यता है. ओके, सेकेंड. Then supreme consciousness. That we always quote this Bhagavad Gita. You cannot wet it with water. You cannot burn it with fire. It's from Bhagavad Gita. That is your supreme consciousness. And from this supreme consciousness, there is a lot of action associated to it. That become yogacara. अच्छा, ये दूसरा वाला जो स्कूल है ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस वाला है. देखो हमने वहां पे भी देखा है, काफी एक्सप्लेनेशन आया कि आप इसको गीला नहीं कर सकते, आप इसको भेद नहीं सकते, आप इसको काट नहीं सकते, आप इसको जला नहीं सकते. ये जो बताया गया है, मैं शब्दों का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही कह रहा हूं. इसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में भगवत गीता में भी बताया गया है. इसी से आगे चल के योगाचारा का स्कूल भी शुरू हुआ है. ये डॉक्टर, Then Bhagavad Gita also said that God have two abode, celestial abode and the supreme abode.
और भगवत गीता में भी काफी अच्छी तरह ये समझाया कि जो भगवान भी अगर जो कैरेक्टर है, अगर हम, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड गॉड, बट व्हाट शुड आई यूज गॉड, द वर्ड गॉड? Business now. हाँ डॉक्टर? No, no worry about God. No worry about God. Okay. You can use the word God. Okay, so जब हम सुप्रीम अबॉट की बात करते हैं, जो भगवत गीता में ये भी बताया कि एक सुप्रीम अबॉट है और एक सेलेस्टियल अबॉट है, मतलब एक जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है जहाँ पे भगवान है, और एक फिर उससे नीचे के लेवल में भी जो सेलेस्टियल है, मतलब पार्थिव तत्व से जुड़ा हुआ है, वो है हमारा दूसरा लेवल, सेलेस्टियल बोलते हैं उसको, और एक है सुप्रीम। Celestial, yeah. Now you want to go to God's place. The abbot, abbot is a God created for us. This thing. Okay. What you do? First, you should do your duty. You do your duty in the name of the God. I mean, you should serve. You should serve people to glorify the name of the God. Okay, it's the first requirement. देखो, आपको अगर सच में गॉड को सर्व करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको दूसरों को सर्व करना पड़ेगा उसके नाम में, तभी आप उसके जो मेरिट्स है आपको वो मिलते रहेंगे उसके पास जाने के लिए। मतलब आपको कुछ मेरिट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे जिसकी बेसिस पे आप उनके पास जा सकते हो। That's where the problem coming from, Krishna asked you to glorify him, He do not ask you to chant his name for 4 or 5 hours, Glorify, Do the work, do everything to glorify in his name. इसीलिए देखो, जब अभी भगवत गीता में आप जब कृष्णा की बात करते हैं, जब कृष्णा कहता है कि आप मेरे पास आओगे जब आप मेरा नाम लोगे, नाम लेने का मतलब ये नहीं कि आप जप करते बतो, मंत्र की जाप करो, यह नहीं बताया उन्होंने, ये बताया कि मेरे नाम मतलब मेरा नाम फैलाओ, मेरा नाम पे तुम काम करो, जाके लोगों की मदद करो, सेवा करो, उससे आपको मेरिट्स मिलेंगे, आप फिर मेरे पास आओगे। या डॉक्टर, this is the characteristic of the Supreme Abbot school, okay? Because every Supreme Abbot, of course, there is a God or there is a Supreme Being in here, the manifestation of this thing for you to go there. Okay, there must be some name or some form, Okay, this you can call it name, you can call it God, or you call it whatever name is up to you. You can call it God, This thing. He created this Abbot for you to go there. जब ये सुप्रीम अबॉट वाला स्कूल है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमेशा एक सुप्रीम बीइंग होगा उसमें, जो एक ऐसा जगह बनाएगा जहां आप आ सकते हो, और वो बुलाता भी है सबको, आओ यहाँ पे आओ। इसमें आप अलग अलग जो आप अबॉट्स हो गए, अलग अलग नाम हो, जैसे कृष्णा की बात करते हैं तो वो भी एक सुप्रीम अबॉट है। तो जब वो बोलता है कि यहाँ पे आओ, मेरे पास आओ, तो ये आपको इन्विटेशन इसलिए देता है कि उसने बनाया हुआ है। ये डॉक्टर, so Rajesh, for us to live bye-bye to this world, never come back. First thing first, you should not attach to this world. If you attach to this world, you will come back. अगर आपको इस संसार से ये जो चक्र चल रहा है, आना जाना, इसमें से अगर आपको निकलना है, वापस कभी नहीं आना है, तो आपको सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपका ये संसार के साथ जो अटैचमेंट है उसको छोड़ना पड़ेगा। यस डॉक्टर। So in Bhagavad Gita say that you do your duty, without any attachment, without any expectation. It doesn't mean that there's no result, Any action carry result, but only things that you don't attach to it. इसलिए भगवत गीता में ये कहा गया है कि आप अपने कर्म करो किसी फल की चिंता किए बगैर, और इसका ये मतलब नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, आपको आपके कर्म के हिसाब का बराबर मिलेगा, लेकिन आप उसके साथ जुड़े मत रहो, अटैच मत रहो, अटैचमेंट ये आपको छोड़ना पड़ेगा। यार See, you do your duty, Okay, you still attached to this world. Oh, you say, God, okay, God, please give me $1 million. Okay, God, please give me a big house. Okay, God, please let my son to become champion in the class. If you ask for all these things, God loves you, still give to you. But you will not go to the Supreme Abbot. You go to the Celestial Abbot. अब ये देखो, आप भगवान से मांग सकते हो, जो कुछ मांगना है मांग सकते हो, आप उसके प्यारे हो, आप अच्छा काम करते हो, आपने बोला मुझे एक बहुत सारा $1 मिलियन दो, वो दे देगा। आपने बोला मुझे एक अच्छा सा बंगलो दे दो, गाड़ी दे दो, वो भी दे देगा। आपने बोला मेरा बच्चा चैंपियन होना चाहिए, वो चैंपियन में रेस में जीतना चाहिए, वो भी हो जाएगा। ये सब कुछ जो मांगोगे वो दे देगा, लेकिन फिर आप उसके जो अबॉट है, सुप्रीम अबॉट, वहां नहीं जाओगे, आप सेलेस्टियल अबॉट में रहोगे, जो नीचे वाला प्लेन है वहां तक रहोगे। यस डॉक्टर।
Krishna said that, okay, one day you will come back. Why you come back? Because you leave this world too much, You fall in love with this world, so that you will not go to Supreme Abode. You go to the Celestial Abode. This. So these are the basic concept in this Bhagavad Gita. इसलिए देखो भगवत गीता में बहुत सिंपल चीज में कृष्ण ने ये कहा कि आप ये जो कर्म करते हो और ये आप संसार के साथ जो अटैचमेंट रखते हो उसके बाद तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। तुम यहाँ पे ऊपर लेवल तक जा सकते हो, सेलेस्टियल अबॉर्ड तक जा सकते हो, लेकिन मेरे पास आने के लिए आपको सब त्याग करना पड़ेगा, तभी वो मेरे पास आ जाओगे। या डॉक्टर। But this Bhagavad Gita do not explain in details of how the Supreme Abode look like. When we come to the Taxila University, okay, there is a few sutra that explain the Supreme Abode in great deal details, in very details. जब भगवत गीता में ये सुप्रीम अबॉर्ड के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बताया कि कैसे दिखता है, क्या है, कैसा है, लेकिन जब आप तक्षशिला में जाओगे, तक्षशिला की जो टीचिंग्स है वहाँ पे बहुत ही डिटेल में, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया गया कि सुप्रीम अबॉर्ड कैसा है, क्या है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। ये डॉक्टर। Now this Supreme Abode is described in great detail first in the Sutra of Amitabha. Okay, now in India, you still have people called Amitabh, maybe Amitabh Bachchan. It's from the name of the sutra. The Sutra of Amitabha. देखो एक हमको अमिताभ ये नाम तो हमें तो अमिताभ बच्चन से पता है, लेकिन अमिताभ जो है ये अगर आप सूत्रा देखोगे, अमिताभा सूत्रा है, वहां में आपको ये अबाउट सुप्रीम अबॉर्ड के बारे में काफी डिटेल में मालूम पड़ता है। तो सबसे पहला रेफरेंस उसी में आया है। ये डॉक्टर। Amitabh means infinite light, this light, very energy, infinite energy. Okay, this is the meaning of Amitabh. अमिताभ का मतलब है इन्फिनिट, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली लाइट या एनर्जी, और इसी का मतलब है अमिताभ। या डॉक्टर। So this pure land, okay, the pure land is created by this manifested now by this Amitabh. Okay, so that under certain condition you can go there. ये प्योर लैंड जब बात आती है, ये किसने मैनिफेस्ट किया है? तो अमिताभा ने मैनिफेस्ट किया, और कुछ कंडीशंस ऐसे जब होंगे तो आप वहां जा सकते हो। या डॉक्टर। You can know his name, okay, you can mention his name, you just need to mention 10 times, okay, to memorize the name, finish enough. अच्छा, ये अगर आपको सिर्फ 10 बार अगर उसका नाम याद रखोगे तो भी आपका काम हो सकता है। Yeah. Then you should do your duty, perform your duty, do all your merits, okay, and you put all your consciousness, put all your mind, put everything, do everything for the pure land, for this Supreme Abode, so that you can go there. फिर उसके बाद आपको जो भी कुछ करना है, जितनी भी आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट है, अपने कर्म है, सब कुछ आपको सिर्फ उसी उद्देश्य से करना है कि अब मेरे को वहां जाना है, तो आप डेफिनेटली वहां जा सकते हो। ये रखो। So this is a characteristic of Pure Land. First, there is a Supreme Lord there, there is a Supreme Lord. Okay. Secondly, you must do your duty to glorify His name. Okay, to glorify His name. Okay. Thirdly, this place is very clean, very holy, very safe. When you go there, you need not come back. This is the characteristic of Pure Land. तो जब ये प्योर लैंड की बात करते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि जब आप किसी भगवान की आराधना करते हो, आप वहाँ जा सकते हो, उनके एक लैंड में जा सकते हो। तो जब आप वहाँ जा सकते हो, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बार वहाँ गए तो आप वापस आने की जरूरत नहीं है। ये जरूरत है। So Buddha described that in great detail in Lotus Sutra. Okay, he said the land are beautiful. Okay, all the floor, or crystal, or diamond, or gold, so that you will not attach to or diamond and gold everywhere left and right. Now it's all this precious stone.
जब इसके बारे में जब डिटेल में बताया तो बुद्ध ने भी अपने लोटस सूत्रा में काफ़ी अच्छी तरह से ये बताया है कि कितना ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही सुंदर है। उसमें काफ़ी आप देखोगे तो जूअल्स है, मतलब यहाँ वहाँ रास्ते पे यहाँ वहाँ सब जगह जूअल्स व्यूअल्स है। इतना ब्यूटीफुल जगह है कि आप, इतना है कि आप अटैच ही नहीं रहने की ज़रूरत है आपका। या डॉक्टर, Then your body, can be any form you want. You want to manifest yourself anything, you're free to manifest yourself as any form. फिर आपका शरीर, आपको कैसा रूप धारण करना है, कोई भी आकार या रूप लेना है तो आप ले सकते हो, ये भी वहाँ पॉसिबल है। Then you're free to travel here and there. This is the thing now. When you want to have any food, the food will come to you. All these things, it's like a heaven, like that. तो आपको कुछ खाना है या वहाँ जाना है, ये एक सच में स्वर्ग है। स्वर्ग के जो भी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। But there is one main difference from the human, Okay, in the Pure Land, there is no men and women, Everybody is at the same form. लेकिन वहां पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे कोई स्त्री और पुरुष नाम की चीज नहीं है, सब एक ही फॉर्म है, एक ही टाइप की एनर्जी है। ये डॉक्टर, It doesn't mean that no man and man. You actually, you want to become a man, you manifest yourself as a man. You want to become a woman, you manifest yourself as a woman, So man and woman lost the meaning because you are free to manifest it if you want. यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप स्त्री या पुरुष नहीं बन सकते, आपको जो बनना है बन सकते हो। इसीलिए वहां पे कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि आप सिर्फ पुरुष हो या स्त्री हो, आप जो भी बनना चाहते हो वहां बन सकते हो। इसीलिए कोई वो फ्रीडम आपके पास टोटली है। ये डॉक्टर, Then there is no this worldly activity, और दुनिया की जो काम धंधे हैं वो वाले कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से जिंदगी कट सकती है वहां पे। With left and right, so have diamond, have crystal, have this lapis lazuli, all the precious stone, it's all around. So there's no point for you to fight for any richness. It's there. So you don't need to worry about to become rich. Rich and prosperity is very high. तो वहां पे तो सब कुछ है, आप हीरे जवाहरात जो कुछ चाहे वो थोड़ा नहीं है, इतने मात्रा में है कि आपको कोई इच्छा ही नहीं बची होगी वहां पे। इतना प्रॉस्परस लाइफ है वहां पे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वाओ डॉक्टर, यू आर टेम्पटिंग मी टू गो देयर। Yeah. Of course, 90% of the religious school are Pure Land school. 90% of the world today. 90% जो स्कूल्स होते हैं जो धर्म के बारे में बताते हैं, वो हमेशा वो प्योर लैंड स्कूल की बात करते हैं, यही कि आप यहाँ पे जा सकते हो। ये जो स्वर्ग वाला कॉन्सेप्ट है। ये डॉक्टर, you have to be very careful. Today we are not promote Amitabha. No. We I think our audience is very clear about it. We are just not trying to promote any. It applies to any religion where you have a Lord. Okay, you need to glorify His name. Okay, you should serve under His name. You go there and never come back. Then this is the pure abode school. अच्छा, ये बहुत क्लियर कर देते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे कोई अमिताभा या इसी गॉड को प्रमोट नहीं कर रहे। हम ये बताना चाहते हैं कि हर एक जो आप फिगर देखते हो गॉड के कैरेक्टर में, ये इनका एक प्योर लैंड होता है जहाँ पे आप जब उस ग्लोरीफाई करते हो। ग्लोरीफाई का मतलब उनके नाम पे जब अच्छा काम करते हो तो आप वहां जाते हो। ये यहाँ पे बताया गया है कि आप वहां जा सकते हो और वो एक स्वर्ग ही है, स्वर्ग का ही पार्ट है। या डॉक्टर, Rajesh, so if you believe in a God, okay, and if you do all your action to glorify Him, okay, you want to go to His place, okay, and you don't want to come back anymore, then you are of the. You are of the our Pure Land School, correct? Now, for Pure Land School have three characteristics. First, there must be a supreme Lord there, Okay, so you must glorify His name. Yeah. Not chanting His name, glorify Him by the good action, Yeah. This and you practice, okay. This and you want to go there and you don't want to come back anymore. Bye bye. This world. Pure Land. This is a pure abode school.
देखो, Yeah, school. जो प्योरलैंड स्कूल होता है कि इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो वहां पे एक सेंट्रल कैरेक्टर होना चाहिए, एक गॉड फिगर होना चाहिए जिसके नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए, जिसको ग्लोरीफाई करने के मतलब उनके नाम पे आपको काम करना है, कर्म आपके उसके नाम के बेसिस पे होना चाहिए, सिर्फ उनके लिए करना है, खुद के लिए नहीं करना है। और तीसरा मतलब आप वहां गए, वापस आने की जरूरत नहीं, संसार के चक्कर में से आप निकल सकते हो। या डॉक्टर। And also, this school also said that, okay, this will be your last life in this world. हम्म। Reincarnation is not necessary, you know. They don't talk about reincarnation. Well, after this life, we go there, you never come back. So don't expect this type of school to talk about reincarnation. वाह। They don't talk about reincarnation. या ये वाले स्कूल जब हमको सिखाते हैं हेवन के बारे में और प्योरलैंड के बारे में, तो ये हमको सिखाते कि आप वहां गए फिर वापस आने की जरूरत नहीं, ये आपका चॉइस था ना। इसीलिए री इनकारनेशन की बात वो लोग कभी नहीं करेंगे और वो बात भी नहीं करते, उसकी उनको जरूरत भी नहीं है। या डॉक्टर। You see, come back to our Sunya practice, no? Whether there's God, there's no God, whether there's reincarnation, there's no reincarnation, it has nothing to do with our practice. जब हम हमारी शून्य प्रैक्टिस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं भगवान है या नहीं है, ये हमारा जो स्वर्ग है या नहीं है, इसका हमारे को कुछ लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ लेना देना है प्रैक्टिस से। ये डॉक्टर। So when we talk about Pure Land, okay, we talk about, it's just a general information. It's not for you to believe. You can believe or you don't believe. Nothing to do with the practice of Sunya. तो देखो, शून्य प्रैक्टिस में आप समझ गए होगे, देखो हम भगवान को माने या ना माने, आप वापस जन्म लोगे या वापस नहीं जन्म लोगे, इसके बारे में हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। मतलब हम उससे कंसर्न नहीं रखते कि आपको फोर्स करते हैं, इसका आपके ऊपर है, आपको बिलीव करना है करो, नहीं करना है मत करो, इसमें कोई फोर्स नहीं है। शून्य स्कूल में हम आपको ये फ्रीडम आपको देते हैं और ये हम लोग भी फॉलो करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस है, शून्य की प्रैक्टिस है, उस पर हम लोग डेफिनेटली फोकस करते हैं। ये डॉक्टर। So as I told you, 90% of religion are from Supreme Upper School, you know. You don't talk about reincarnation with them, you know. The reincarnation is not necessary in this school, you know. Okay, and don't argue with them. Whether there is reincarnation or there is no reincarnation, leave it, lost. Okay, this school, they do not need to believe in reincarnation. 90% से भी ज्यादा जो स्कूल्स होते हैं जो हमको सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो प्योर लैंड स्कूल के हैं, और इसीलिए उनमें से काफ़ी हद तक लोग ये मानते हैं कि रीइंकारनेशन नहीं है। तो आप अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए किसी के साथ डिबेट करने में कि है रीइंकारनेशन होता है नहीं होता है, इसमें वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। या डॉक्टर। Yeah. So today just an introduction, you know, just an introduction. So there's a characteristic, but we know what is Supreme Upper School, what is not, you know. To chant the name from the morning until evening for 4 to 5 hours, definitely is not from this school. देखो, आज ये तो सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आज का प्रोग्राम, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो प्योरलैंड स्कूल में है, ये हम जब सुबह से शाम सिर्फ जप करो उनका नाम लेके, ये नहीं है, ये डेफिनेटली वो स्कूल का टीचिंग नहीं है। ग्लोरीफाई करना, उसके नाम पे अच्छा काम करना, ये डेफिनेटली उसका टीचिंग हो सकता है। ये डॉक्टर। So you see, some of this pure land school, like this Krishna school, they keep on chanting Ram Krishna, Hare Krishna, keep on chanting Krishna for 4 or 5 hours. Then they also this Amitabha day. देखो, अभी अगर आप देखोगे हरे कृष्णा का स्कूल है जहाँ पे आप कृष्णा का नाम सिर्फ जप करते रहते हो कर्म, लेकिन उसके नाम पे नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। उसी तरह अमिताभ वो का भी जो चैंटिंग करने वाले एक स्कूल है, वो भी वही करेंगे, लेकिन सिर्फ चैंटिंग करोगे और उनके नाम पे अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है सब चैंटिंग का। ये सही सीख नहीं है। ये डॉक्टर। This is chanting the name is not enough. You need to do good action, you know, to glorify the name. So when you chant the name, remember, action is more important than chanting the name of Lord. Lord doesn't need you to chant His name. देखो, बहुत सिंपल है। भगवान ये नहीं चाहता कि आप मेरा नाम सुबह से लेकर रात तक जपते रहो। भगवान ये चाहता है, लेकिन जरूर कि आप उसके नाम पे कुछ अच्छा काम करो, उसके स्वरूप बन के आप जाके किसी की मदद करो, किसी को हेल्प करो, तब उसका नाम आप सही में आगे लेके जा रहे हो। ये डॉक्टर।
the Amitabha, no, Amitabha asked you to chant his name 10 times. You remember him and do in his name, then you can go to his award. As simple as that. अमिताभ ने ये कहा है कि मेरा नाम 10 बार लो। 10 बार लो मतलब आप कुछ काम करो, 10 ऐसे काम करो जिसकी वजह से तुम मेरे पास आ सकते हो मेरे नाम पे, तब तब कहीं आप उसके पास जा सकते हो। ये समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ 10 बार नाम लेने से, चैंटिंग करने से नहीं जा सकते। क्या It do not ask you to chant, Nama Amitabha, Nama Amitabha, Nama Amitabha, for 4 to 5 hours, like many people are doing now. सिर्फ नमो The sutra never asks you to do that. सिर्फ चैंटिंग करने से नहीं होगा, सिर्फ चैंटिंग आप, but in a way doctor, chanting is okay, but only chanting and not doing anything is a big problem. Now you say twisting the body is okay. Yeah. But you twist the acrobat is not okay. Absolutely. Yeah, doing Chanting is okay, but you chant for 4 to 5 hours is not okay. Absolutely. That's true. देखो, चैंटिंग करना बुरा बात नहीं है, चैंटिंग आप थोड़ा बहुत करना अच्छा होता है, डेफिनेटली अच्छा होता है, लेकिन आप 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ चैंटिंग करते हो, काम नहीं करते हो, नौकरी नहीं करते हो, जिसका चांट ले रहे हो, जिसका नाम ले रहे हो, उसके नाम पे कुछ काम नहीं कर रहे हो, समाज में कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। So I just said that only chanting the name will not help, but in the name that you are chanting, if you do some good action and help the people and connect with the society, probably that would be the real chanting. Doing it again and again and every day, that is real chanting. Yeah, real chanting. Yeah. So as we mentioned, the second chapter of Quran, he said that you cannot just by believing the name, you need to follow the teaching of God. जैसे जो दूसरा अध्याय है कुरान का, उसमें भी ये बताया कि सिर्फ मेरा नाम जपने से नहीं, मेरे जो मैंने बताया है, जो सीख बताई है, उसको फॉलो करने से ही आप मेरे तरफ पहुंच सकते हो। या डॉक्टर, So after you study the Taxila University, you study all the teaching, then when you go back to your own religion, I think you will. एब्सोल्युटली। जब आप ये तक्षशिला की जो सीख है, अन्नपाना और बाकी अमर जो शून्य का कॉन्सेप्ट, ये सब सीखोगे, जब फिर उस सीख के साथ जब आप अपने धर्म को, अपने जो फेथ को वापस जाके देखोगे, तो आपको कोई अलग नई चीज नजर आएगी, वही नजर आएगी, और आप अपना धर्म जो भी हो, आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप बहुत अच्छी तरह निभाओगे। एंड दैट इज ट्रू डॉक्टर, आई टोटली एग्री। द व्यू, इट्स it changes your right view. Yeah, you get the right view, and suddenly everything, even the same religion now is a profound religion. Suddenly makes more meaning. Make more meaning. So when you go back to your own religion, you can understand your own religion much better. और अपने धर्म को आप और भी अच्छी तरह समझ पाते हो। डॉक्टर, one question fast. Is the chanting for focus? Is chanting done for focus? Can practice focus by chanting. Of course, you can practice focus by chanting. Okay, but you see, let me explain now. Let me explain. Okay, now after reverse counting, okay, we observe the breathing in and out, in and out. Okay, so instead of after breathing in and out, you can chant certain name, certain thing. So without losing concentration on that. Okay, that is also part of the practice if you want. जी, हम लोग जो रिवर्स काउंट करते हैं, सांसें अंदर जाना, बाहर जाना, और हम गिनती करते हैं, तो जब ये खत्म हो जाए, जब हमको सांसों पे ध्यान रखना है, तब आप चैंटिंग का सहारा ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप उसका भी सहारा ले सकते हो अपना फोकस रखने के लिए। या डॉक्टर, For example, after reverse counting, you become very calm, become this thing, okay, then you decided to chant Hare Krishna. Okay, there's nothing wrong there now. So you can repeat the word, I must focus on it, Okay, even a long time also you can still focus on it. That is the right chanting. अगर आपको सच में जप करना है, ध्यान से करना है, आप जब हमारा जो समता विपासना जब हम करते हैं शून्य, जब आपका मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए,
तब जब आप ध्यान से चैंटिंग करोगे, पूरा फोकस के साथ, हर शब्द के साथ को पूरी अटेंशन के साथ, वो असली चैंटिंग हुई. या ओके डॉक्टर, फैंटास्टिक. So chanting become a vipassana practice. A vipassana practice. So instead of observing your what do you call your breathing in and out, you observe the name, what do you call the name of Lord. This is for Pure Land School is allowed. The Pure Land School is you're allowed to do that, you know. So instead of in and out, you chant quietly, you know. Okay, you can chant with the mouth and listen to it, you know. Okay, or you can repeat mentally. Okay, without losing your concentration. That is the प्योरलैंड स्कूल की जब बात आती है तो ये आपको अधिकार भी है, आप कर सकते हो. आप जैसे हम लोग सांसें देखते हैं, अंदर जाना बाहर जाना, जब आप विपासना स्टेज में आते हो, जब आप देखने की बात आती है, ऑब्जर्व करने की बात आती है, तो आप मन में चिल्ला के नहीं, जबरदस्ती नहीं, जोर से नहीं, अपने को सुनाई दे उतने आवाज में धीरे से या फिर मन में किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हो और उस पर पूरी तरह ध्यान देके उस मंत्र के आवाज को देखो, सुनो और देखो और उस पर पूरी तरह फोकस रखो. ये भी आपका विपासना प्रैक्टिस ही हुआ है. या डॉक्टर? But today is not chanting like that, you know. It's still a tiger, you know. Maybe today I should chant the name 10,000 times. So they get a beat. Oh, they keep on chanting the name, you know. They chase after the 10,000 times, you know. It's not chanting. There are counters, doctor. Counter, okay, 1 count, 100 count, no. So you should chant 1,000 times. So 100,000 to 1,000 times, you know. To this thing take about 4 or 5 hours. Yeah, I've tried it, so I know. So what chanting जो होता है, chanting रेस नहीं है. आप लेके कितनी बार कर रहे हो, कितनी बार, 1000 बार, 10,000 बार, इतने बार, ये रेस नहीं है कि आप एक दूसरे को पर लगा रहे हो. चैंटिंग होता है पूरे ध्यान के साथ, 100% ऑब्जर्व करते वक्त हर शब्द का मीनिंग और उसका अर्थ, हर बार हर चैंट के साथ उसका मीनिंग आपको अलग नजर आएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैंट भी कर सकते हो लेकिन उसको सही तरीके से करो. आज जो करते हैं वो सही चैंटिंग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर, यू नो, आई यूज्ड टू चैंट. It was so I did not care at all, you know. I used to just want to finish the chanting. I was in a race. So, oh yeah. Okay. So there is. You see, Rajesh, nothing wrong with chanting, you know. But if we are overdoing it, then it is wrong. Absolutely, you know. कोई भी चीज देखो गलत नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप हद से ज्यादा करते हो, अतियोग करते हो किसी चीज का, तो वहां गलती शुरू हो जाती है. There's nothing wrong to twist your body. When you're over twisting, is wrong. There's nothing wrong to practice your breathing. You over practice it, then something is wrong. There's nothing wrong with chanting, but you're overdoing it, then this is wrong. देखो, आसन करना, योगा करना एक लिमिट तक सब सही है, सब अपने अपने हिसाब से परफेक्ट है और उसका सबका फायदा भी है. लेकिन जब आप उसकी लिमिट क्रॉस करते हो, किसी चीज को अतियोग की तरफ लेके जाते हो, तब तकलीफ शुरू हो जाती है, तब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है. आई थिंक वी हैड अ गुड डिस्कशन. This is a big school, no? These two are big school, Aratana and this Adapana and this big school. So today is not possible. We just scratch the surface of it. So maybe we leave to some other series with more detail. ये जो हम स्कूल की बात की आज, प्योरलैंड स्कूल की, ये बहुत बड़ा स्कूल है. अन्नपाना भी बहुत बड़ा स्कूल है. इसको सिखाने के लिए मेरे हिसाब से, जैसे डॉक्टर ने कहा, 16 अध्याय वाला अन्नपाना है. वो सीखने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा. आने वाले कुछ एपिसोड्स फ्यूचर के लिए हम उसके लिए रख सकते हैं. आज तो हमने सरफेस को सिर्फ स्क्रैच किया है, इसके बारे में सिर्फ आपको एहसास दिलाया कि क्या है, क्योंकि शायद हम को पता ही नहीं है. You know, it's so unfortunate, doctor, that these are the teachings of the great schools of India, the universities of India, and unfortunately we have never had the slightest idea of what it was. So probably these sessions are actually giving back India what belongs to India. Giving back, yeah. The problem is that the Malaysian, our Malaysians, maybe some Chinese, they are more Indian than Indian. Where all this tradition is preserved until today. Absolutely. Even in Malaysia now. Absolutely. You many Sanskrit words still using today. Absolutely. जो डॉक्टर लिम कह रहे हैं सही है कि आज की स्थिति ऐसी है कि
शायद मलेशिया वाला जो कुछ कुछ वर्ग है, कुछ लोग हैं, वो ज़्यादा भारतीय है। चाइनीज़ कुछ ऐसा वर्ग है जो ज़्यादा भारतीय है, क्योंकि उन्होंने अभी भी भारतीय संस्कृति को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन शायद भारतीयों ने ही अपनी संस्कृति को नहीं संभाल पाया। तो वक्त आ चुका है कि हम अपनी संस्कृति को समझें, अपने नज़र से, एक अलग नज़र से, और फिर परखें उसे, और फिर उसको कैसे हम अपने संजो के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। या डॉक्टर, आई थिंक फॉर टुडे दिस वाज। Yeah. So in the next series next week, maybe talk about the yoga chara, the 17 level of yoga. Okay, that will be interesting. That will be interesting. That's one of my favorite. अगले अगले हफ्ते हम लोग योगाचारा सीखेंगे, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज मेरे को योगाचारा बारे में कुछ नहीं पता था। इट्स डॉक्टर लिम जिन्होंने मेरे को योगाचारा सिखाया। तो अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे हम योगाचारा के बारे में सीखने के लिए। जो 17 लेवल्स बताए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अमेजिंग है। तो जिनको इंक्वायरी, जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि क्या है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, क्या है, ये अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट वीक आप जरूर ट्यून कीजिए वापस। ये डॉक्टर। Yeah, yeah. So okay, so we see you next week. Okay, so Thank you. yeah. Bye bye. Okay, thank you डॉक्टर। एंड दोस्तों, फिर आज हम यहीं पे हमारा सेशन खत्म करेंगे, और हम मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से। तो अगले हफ्ते जब मिलेंगे, हम योगाचारा के बारे में सीखने वाले 17 लेवल्स ऑफ योगाचारा। ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मजा आएगा। यू लव दिस सेशन नेक्स्ट वीक, आई एम टेलिंग यू गाइज। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। योगाचारा इज वन ऑफ द teaching schools that I was interested. As we learned today, there were many schools. There's a Pure Land school, there is a Yogachara school, there is a Shunyata school. But Shunya is basically a mix of all these schools. But in that school, there are certain subjects that you like. Like for example, in a class, you like a certain subject, chemistry, biology, physics, or something. For me, I fell in love with Yogachara, and I love the concept when doctor taught me about it, and I realized that was an Indian teaching, and that gave me more interest in it. So don't miss the next session. अगला सेशन जरूर मिस मत कीजिएगा। अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे 5 बजे शाम को फिर से एक बार, और आपके सवालों को आप प्लीज़ रखिए, हम ज़रूर इसको लेंगे। मैं और डॉक्टर इसको पढ़ते ज़रूर है, आपको ज़रूर जवाब देंगे। सो थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग, शून्य प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप ज़रूर हमारे लिए वापस मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।